So, hello everyone, and a very good evening to all of you, and welcome to Career Launcher. So, I hope you all are aware that from Monday to Saturday at 8 p.m. we are having the Hindu analysis, which is generally taken by Govind sir, but on Saturday I take the class. So, let us begin. 8 p.m. we are having today is 15th November, right? I think I'm audible, visible. Is my voice reaching? The slide is visible. Yes, fine. So yesterday was 14th November. What is the special? Like, there's a very famous day that is celebrated on 14th November. What is that? 14th November is what? November is Children's Day, right? Hannah? In the memory of first Prime Minister of India, right? Yes. Good. So let us begin with the first article, and the first article, of course, talking about the result of Bihar elections. Yes. Today is 150th birthday of Birsa Munda, right? Huh? Good. So please read about Birsa Munda also, because they can ask questions. Okay. Now, so this article is talking about Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana. NDA takes Bihar by storm. Okay, so basically we'll discuss it from academic point of view more. And first thing, please tell me how many seats total MLAs are there in Bihar Legislative Assembly? Total MLAs. 243. So how much is needed to make the chief minister? So in Legislative Assembly, how much MLA? 243 how much you need to make your own chief minister? So please divide it. 243 divided by 2 will be 121.5, right? So you have to cross the half mark. It means you need 122 MLAs, right? Because 122 double 244 ho jayega. So the answer is 122, not 123, right? You have to just cross the half mark. Half mark is 121.5 and 122 is crossing the half mark. Okay? So the party which has got or the alliance which has got at least 122 seats should make their own chief minister, right? That is what you should be knowing about. So basically, let us talk about it. So NDA comprises of 89. Here is this one, and this one at least, and others में भी शायद कुछ party होगी, but at least these four are part of NDA. Okay, so if you add it, of course it is crossing 122, much more than that. And there was opposition alliance which was mostly led by RJD and Congress, that is called as Mahagathbandhan. So these are basic things, basic facts that you should be knowing it. Sorry. So basically, है ना, तो आप चाहो तो देख सकते हो, but otherwise in the examination they will not ask about this कि percentage बताओ किसको कितना वोट मिला etc. But एक rough idea होना चाहिए, that is more than enough, I think. उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए, है ना. कुछ परसेंटेज वगैरह ये इतना नहीं पूछेंगे, but I have attached for you like etc and all. Yes. Now, एक चीज जो न्यूज में था which I want to highlight is मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना. So what is that? Can anyone tell me what was the scheme all about? It was very much in the news. So rupees 10,000 was provided to 75 lakh women. That was the target to start their business. And once the business is successful, I think after a few months, they will be given, those who have got successful business, rupees 2 lakh as loans, interest-free loans. अच्छा 1.25 crore tha, I'm not sure, like so I got to know that it was, I think, 75 lakh. हो सकता है बाद में increase कर दिया गया numbers, but yes, it was given to huge number of women. Bihar Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana. So to provide so that they can have self-employment, the concept of self-employment. Okay. But when after they lost the election, the Congress said that it is not correct. Congress called CC mute, spectator, etc. Now, so which provision generally it actually prohibits such thing? Means the opposition was saying that it is a sort of a bribery. That is what opposition has put the allegation. The Hindu के first page में 1.25 crore लिखा है. Okay, let me read.
अच्छा बाद में हो सकता है इंक्रीज कर दियोगे हाँ 1.25 करोड़ यस 1.25 करोड़ वुमेन yes what the opposition is saying, they are saying that this is violation of section 123 and ideally the election commission should have stopped it. This is what the opposition has put allegation. Representation of People's Act 1951 section 123 talks defines bribery, so any sort of gift or offer or promise by the candidate etc just before the election etc is actually considered as corrupt practice. That was why it was in the news. So maybe ये सब section वगैरह शायद पूछ ले. And you should be aware there are two laws. One is Representation of People's Act 1950. Another is Representation of People's Act 1951. Both deals with election procedure. Okay, one more thing I want to highlight. Recently, SIR was conducted. Under which section and which law it was done? Which section and which law SIR was conducted by Election Commission? I have taught in the paid class. And this has been in the news. Even now, we have seen SIR being conducted in 9 further states and 3 union territory also. Right after Bihar. I have taught in the paid classes. So I believe you all should be answering. Special intensive revision that was done by the Election Commission in Bihar, which is now being done in 9 states and 3 union territories. Very good, Priyanshi. So basically under Article 324, which is the Constitution, plus Section 21 of Representation of People's Act 1950, preparation of electoral rolls करके. It also includes revision of electoral rolls. ठीक है? So these are the basic things you should be knowing. क्योंकि ये सब news में, so of course they can ask it. ठीक है? And I've taught in the paid classes, so I believe that you should be knowing. ठीक है? हाँ. तो इसमें लिखा होगा ना, so they have got 10,000 rupees to 1.25 crore women. Odra seem to have played an important role. So the election after that, though, the journalists are writing that perhaps this Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana played a very important role in this. That is what is being talked about. And baki political hai, aap chaho to padh sakte ho, you can read it. We are not going in that detail of like political angle, etc. You should know from academic point of view things, है ना? So that is what you should know. तो ये था, है ना? So BJP, JDU and RJD. इसमें और कुछ बताने के 243 seats. ठीक है, so these three drew are from NDA, and of course Mr. Chirag Paswan is also part of NDA. Okay, ठीक है, Hams है, this is also part of NDA, है ना? And RLM did not get this, did not fight the election, but they are also considered as part of NDA. खैर, let's move on. नीचे में आओगे, so एक article थे Indian Air Force aircraft crash on Friday. So that was actually in the news near Chennai. So this is the place near Chennai where this unfortunate incident happened. However, this is a trainer aircraft. However, the person has survived with God's grace. I mean, he ejected at the right time, and that's why he survived. The name of the plane is Pilatus PC-7. Okay, Pilatus PC-7 turbo trainer. So this is actually made in Switzerland. Okay, that is what you should know. Who is Samrat Chaudhary? He's a BJP leader from Bihar. So before the election, he is the deputy CM. Before the election, there were 2 deputy CMs before the election, and CM was Nitish Kumar. So Samrat Chaudhary is one of the politicians from BJP. Yes, someone is asking in the comments. Okay, that is what you should be knowing. Yes, that was also in the news. ये एक और side में article था. This one. So I'm sure you must be aware of the Delhi blast. I'm sure Sir has discussed it in the Hindu analysis. So what happened was, following that this incident happened, and this I think happened yesterday, and it was a very unfortunate incident. What happened was a huge amount of explosives were found in Faridabad, etc. I'm sure you must be following that news. And those things were taken to Jammu and Kashmir, and there were some, like according to DGP, due to the sensitive and unstable nature of the recovered material, the sampling and examination were being carried out in that police station, Naugam in Srinagar. And what happened was mistakenly it got blasted, and unfortunately many people actually died. So there are some reports right now, they are saying 9 people died in an accident blast. So that those materials were actually recovered from Haryana's Faridabad. So of course it appears that it was a very heavy and powerful explosives were there, that even with a small mistake, I mean people so many people lost their life. So that is why it was actually in the news.
So the JNK police has categorically claimed that there is no Pakistan-based terror group involved in this because this was an accidental mistake. Like it was not done by someone, but mistakenly this incident of Jammu and Kashmir, Srinagar Nagaum police station actually got exploded. So that is what you should be knowing about. Now, on first page, there was an article talking about central government notifies key part of Digital Personal Data Protection Act. Please tell me uh, which judgment of Supreme Court talks about right to privacy as a fundamental right, and under which article? Yes, case Puttaswamy case said right to privacy is a fundamental right. August 2017 under Article 21. So what happens is after that, Justice B.N. Sri Krishna Committee was set up by the central government. And it gave some recommendation regarding Digital Data Protection Act. Because of course, if right to privacy is a fundamental right, you have to protect the data of people. है ना? अगर right to privacy एक fundamental right है, तो लोगों का data protect करना जरूरी है ना? Because it's a fundamental right. So for that, Justice B.N. Sri Krishna Committee, a former Supreme Court judge-led committee was made. The committee recommended something. However, the government, I think they did some changes also in that. And they brought a new data protection bill and that was passed. ठीक है. So recently उसको notify किया गया. Notify means now from now onwards it will be implemented. Okay, so these are the things. अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाने. I think उसके लिए फिर I think we have to take a separate class for that. Notified after 2 years, RTI Act amended. So what I would suggest is, है ना, इसको पहले पढ़ लेना. केस पुट्टास्वामी केस, you know, 9-0 order. Right to privacy is a fundamental right under Article 21. ओके है ना. तो इसमें ये करना है. अगर आपको पास लाइक आई वुड सजेस्ट यू शुड रीड इट. इसको सर्च कीजिए, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 PRS, ऐसे सर्च कीजिएगा, ये लिंक मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा. प्लीज रीड इट, है ना. They have defined, people are asking what is data fiduciary and etc. So they have defined it here. Please read that. ठीक है. Okay, let's move on further. Let's talk about editorials. So flexible inflation targeting a good balance. Now, this is written by Mr. C. Rangarajan, and he had earlier served as RBI governor. We have Rangarajan committee also, okay, and Mr. N.R. Bhanumurthy. So these are very top class economists. I have some question regarding it, which has been discussed in this article. ठीक है, तो मेरे को एक दो क्वेश्चन का सा बताइए. What is RBI's inflation target? RBI का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो है कितना? What is that? And who has given this target? Yes, Karthikya, Sneha, Priyanshi, you all right? 4 plus minus 2%. So technically it is called as 2% to 6%, right? Who gave this target? मतलब 2 से 6% तक है, it's good, fine. If it is less than 2%, not very good. If there is more than 6%. Who gave this target? MS Swaminathan, MPC. MS Swaminathan is related with Green Revolution. Committee decision. Who gave this target? I'm not asking. Monetary Policy Committee has the job to ensure this 2 to 6%. Who gave this? There's a famous committee which gave this recommendation. Urjit Patel Committee. I think it's way back in 2015-16. Okay. So at that time, Mr. Urjit Patel was Deputy RBI Governor. Later on, he became RBI Governor. And later on, he resigned, etc. and all. Okay. So now it is the job of MPC, the job of Monetary Policy Committee, to ensure that inflation is within 4 plus minus 2%, or what we call it as 2 to 6%. Now I have one question of Monetary Policy Committee. Please tell me how many members are there, how many from RBI, how many from central government, who is the chairperson, ex officio chairperson. ये सब बताइए आप. Yes, Monetary Policy Committee has 6 members, 3 from RBI, 3 from central government, 3 appointed by central government. So I'm writing CG. Headed by RBI governor. Yes, so here one of them is RBI governor, and he is actually by default ex officio chairperson of
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट? दैट इज व्हाट यू शुड नो, मिस्टर संजय मल्होत्रा, राइट? ठीक है, सो ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. नाउ द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट दिस कि दिस है ना flexible inflation target mandate that has a mandate to for monetary policy ki 4 plus minus 2% ko, it is ending on March 2026. I think this concept was given somewhere around 2016. You should have 4 plus minus 2% of target, right? So in March 2026 this idea will end. Let us see what will happen after that, है ना? This is discussion paper etc and all. ठीक है, तो इसमें है this article addresses question of headline excluding है ना, headline versus core, है ना? तो अब इतना डिटेल नहीं जाना है, थोड़ा सा पता होना चाहिए. कोर इन्फ्लेशन जो होता है देयर वी एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल एटसेट्रा, ठीक है? तो दैट इज व्हाट यू शुड नो. अब इसके ज्यादा आगे डिटेल जाने की जरूरत नहीं, बहुत एक्चुअली बहुत डीप में गया मैं, एंड आई डोंट थिंक यू विल हैव टू गो सो मच इन डिटेल. मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह की बात की है ना? सो हेडलाइन इन्फ्लेशन ओवरऑल होता है, कोर इन्फ्लेशन में वी एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है? कस्तूरी रंजन कमिटी इज अबाउट वेस्टर्न घाट्स, यस, वेटलैंड नहीं, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है, ठीक है? खैर हम लोग यहाँ चले गए. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. नेक्स्ट है फिलिप्स कर्व. थोड़ा सा देखो, लोग फिलिप्स कर्व की बात करें, थोड़ा सा मैं बताता हूँ. फिलिप्स कर्व इज दिस, ठीक है? ये इन्फ्लेशन है, ये एम्प्लॉयमेंट, इसको फिलिप्स कर्व कहते हैं ना, ठीक है? हाँ, सो इन्फ्लेशन अगर हाई रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, है ना? इन्फ्लेशन लेस रहेगा तो, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट वर्क्स, बिकॉज बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट दिस कॉन्सेप्ट फेल्स. एक सर्टेन लेवल के बाद ये लॉजिक काम नहीं करती है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज फिलिप्स कर्व एंड इट हैज सम लिमिटेशन, ऑफ कोर्स, नो डाउट. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड, ठीक है? Now, अब वही साइड में आर्टिकल है, डबल इंजन वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड क्लोज टू पोल्स इन बिहार. वही दैट दे आर टॉकिंग अबाउट मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, है ना? वही उसी की बात करें, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है? इसमें तो पॉलिटिकल आर्टिकल है ना? इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इट, है ना? आई डोंट थिंक दे विल आस्क पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, है ना? नाउ द नेक्स्ट वन इज द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एंड अ मिनिस्ट्री नॉट्स. अच्छा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, व्हिच प्रोजेक्ट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? विदाउट रीडिंग आर्टिकल थिंक एंड आंसर मी. किसकी बात हो रही है? ग्रेट निकोबार कह रहे थे अभी. व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ दिस? एटलीस्ट सी वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव. इतना बार बताऊं, है ना? थोड़ा बहुत तो पता होगा, ठीक है? सो दे आर टॉकिंग अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर, है ना? दे वर द मैटर वाज बीइंग हर्ड, सो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल व्हाट दे सेड, and by NITCO, right? हाँ, NITCO is developing it. Ecologically sensitive. Negative aspect ये, तो अंडमान निकोबार है, तो निकोबार, ग्रेट निकोबार के नीचे में यहाँ पे गैलेथिया बे. सो उसमें जो पॉजिटिव्स भी है एंड नेगेटिव्स. सो नेगेटिव्स दे आर सेइंग इज एक्चुअली एनवायरनमेंट कंसर्न. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट सेकंड इंडिया नेगेटिव. यस कार्तिक, वेरी गुड. सो पॉजिटिव इसमें ये है कि इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो बहुत ये है, इट्स वेरी नियर टू, यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है? सो स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिक वर्ड जो है जनरली, एक तो कैसे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री के एंगल से भी देखा था. स्ट्रेटेजिक जो है ना, जनरली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट लिया था. एक तो ये है. दूसरा है कि ऑफ कोर्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसशिपमेंट हब हो जाएगा. सेकंड ट्रांसशिपमेंट हब, है ना? ट्रांसशिपमेट हब ऑफ इंडिया आफ्टर विजयनगरम, बिकॉज उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है. सो इवन फ्रॉम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज जनरली कंसिडर्ड. बट इसमें यह है कि बहुत सारे लोग, लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन क्रिटिसिज्म एटसेट्रा आल्सो, ठीक है? वो है एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली, ठीक है? सो ये जनाब लिख रहे हैं जैसे, है ना? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हियरिंग मैटर एटसेट्रा, ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. सो व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एटसेट्रा, है ना? 92,000 करोड़ का शिपमेंट, है ना? इंक्लूड्स ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा. वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. एंड द मैटर इज बीइंग चैलेंज्ड इन एनजीटी एंड कैलकाटा हाई कोर्ट. व्हाट इज कैलकाटा हाई कोर्ट डूइंग? व्हाई? कोई बता सकता है? एनजीटी मींस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सो ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस गोस देयर, है ना? बट व्हाई like they have written Calcutta High Court? कोई बता सकता है द रीजन, लॉजिक? It's less of knowledge, more. Yes, very good, Karthik. It's more of common sense. Andaman and Nicobar lies in under Calcutta High Court jurisdiction.
ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आई हैव सीन इट, नॉट इन क्लैट, आई हैव नॉट सीन इन क्लैट इन रिसेंट ईयर्स, बट बाकी एग्जाम से पूछा है। ठीक है, सो हैव टू बी केयरफुल। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट, इसके अंदर क्या था, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, हैव अटैच फॉर यू। ठीक है, एंड मेन मुंबई में, बट अदर प्लेसेस में भी। कैलकाटा हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार लिखा है। ठीक है, दे हैव बेंचेस इन कोलकाता एंड अदर प्लेसेस। मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। देन जो मल्टीपल होता है, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो सबको पता होगा, इलाहाबाद क्या होगा, उत्तर प्रदेश। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ जुरिसडिक्शन इसी का है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जुरिसडिक्शन। तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे एक तरह से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, गुवाहाटी में है ना, ओडिशा का ओडिशा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पूछेंगे। जैसे राजस्थान का राजस्थान में, ये पूछेंगे जयपुर में, लेकिन मेन बेंच नहीं, मेन बेंच जयपुर में। ठीक है, ये सब आसान है। जबलपुर में मेन हाई कोर्ट है। केरला और लक्षद्वीप का है। पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का है। ठीक है, सो जैसे जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सो जो एक से ज्यादा होता है उसमें होता है। अंडमान निकोबार की लॉयर को बड़ी दिक्कत होती होगी, यस कृषि सचदेव, बट आई थिंक अब ऑनलाइन होने के बाद थोड़ा सा इजियर होगा। ठीक है, मोस्ट लाइकली। हाँ, तो ये बात हो रही है, एक बात हुई। नेक्स्ट गैलेक्सिया बे की बात हुई है ना, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती टॉक्ड अबाउट इट, तो ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना दलील दिया। कोरल कॉलोनीज, यस, सो व्हाट इज द मेन थिंग, यू विल फाइंड कोरल्स देयर। ओके, फर्स्ट। सेकंड, और क्या क्या है इसमें, एक तो कोरल्स, आप जानते हो इसको कोरल्स कहते हैं, कोरल रीफ्स, है ना, यू विल फाइंड इट, अंडमान निकोबार इज आल्सो देयर, एंड दीज आर वेरी सेंसिटिव। फर्स्ट, दे आर हाई बायोडाइवर्सिटी, बहुत हाई है इसकी, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव आल्सो। थोड़ा सा अगर आप डिस्टर्ब करोगे ना, सो दे गेट डिस्ट्रॉयड। यस, ठीक है, और कोरल्स जो है ना, यहां पर बहुत होते हैं, पूरे इस रीजन में, वर्ल्ड के इस रीजन में कोरल्स बहुत पाए जाते हैं, है ना, दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना, थोड़ा सा भी, है ना। कोरल्स जो है वो एक नेडेरिया एनिमल फैमिली से आता है, एंड उसके साथ एक जूजेंथेले, एक ये फंगाई है ना, विच गिव्स कलर, यानी जो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत है ना देखने में, वो जूजेंथेले की वजह से, और ये जो है फूड मतलब से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो बोथ आर एक्चुअली इन सिम्बायोसिस। हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ भी यही, राइट, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो एक चीज तो कोरल्स वाला मसला है, और भी एक दो लेदर बैक टर्टल वगैरह था, इसमें लिखा होगा कहीं पर, आई एम श्योर इट मस्ट बी रिटन, आई वाज रीडिंग इट। हाँ, शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर निकोबार मेगापोड आता है। ठीक है, कोरल्स होगा, एंड जायंट लेदर बैक टर्टल। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज बता रहे, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लेट्स टॉक अबाउट दिस लिटिल बिट। देखो, पहले क्या होता था, there is wildlife protection act 1972, थोड़ा सा मैं, I think it's important, so that's why I'm discussing it. Before that there were 6 schedules. ठीक है, after 2022 amendments were done and now we are having 4 schedules. ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो होता है वो एनिमल का अंदर होता है, एनिमल का जो होता है वो शेड्यूल 1 में होता है, हाईएस्ट लेवल। इसका लेसर होता है ये प्लांट स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये शेड्यूल 4 साइट्स, ये अभी जाने की जरूरत नहीं है, आपके काम करनी, बस आपको ये पता होना चाहिए, देयर आर 4 शेड्यूल्स, द मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज गिवन इन शेड्यूल 1। ओके, एंड दे आर सेइंग दैट लेदर बैक टर्टल, देखो ये जो निकोबार मेगापोड लिखा ना, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, राइट, आर यू एबल टू सी, एंड जायंट लेदर बैक टर्टल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि दे नीड एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एंड दैट इज व्हाई लाइक दोज हु आर अपोजिंग द गैलेक्सी बे प्रोजेक्ट, दे आर गिविंग दिस लॉजिक। अच्छा, एक चीज आप बता रहे हैं, I'm sure many people are not aware, so that's why I'm telling you. When you get a chance to visit a zoo, a national park, or a wildlife sanctuary, yeah, or similar to like जैसे biosphere reserve etc. Those who are, वहां लिखा रहेगा, जब आप जाओगे एंट्री करोगे तो बाहर लिखा रहता है, it is protected under Wildlife Protection Act 1972. Please do not give any food to the animal. Why? अगर आप जब भी जू जाओ या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाओ या नेशनल पार्क फ्यूचर में जाओ, ठीक है, बिकॉज कई लोगों को नहीं पता होता है, इफ यू, अगर आपने खाना दे दिया, एक बिस्किट भी दे दिया, तो आपका एफआईआर में रजिस्टर हो सकता है। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल आर नॉट अवेयर कि एक ही बिस्किट ही तो दे रहे हैं, लेकिन नहीं देना है। ठीक है, सो यू रीड इट एंड यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट ऑल्सो, यस, एंड दैट्स व्हाई द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि ऑफ कोर्स कोई बिस्किट दे रहा है, कोई उसको नुकसान करिए, कोई ऐसी चीज आपने दी, उसने खा लिया, और समथिंग लाइक दैट। सो जनरली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट यस, नाउ सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ठीक है, सो गलती से भी इवन जू भी गए हो तो बिस्किट, कोई भी खाने की चीज नहीं देना उसको,
नहीं, भलाई के जमाने की बात नहीं एक्चुअली कृषि सचदेवा, इट्स एक्चुअली तो इंश्योर कि उसको नुकसान नहीं हो जाए, है ना, कोई कुछ दे दिया ऐसी चीज जो उसको नुकसान करके उसने खा लिया, दैट्स द आइडिया। खैर, देन दे आर टॉकिंग अबाउट कोस्टल रेगुलेशन जोन। अच्छा, ये भी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। सो देयर इज अ लॉ कॉल्ड एज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, उसके अंदर क्या होता है, कोस्टल एरियाज में कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वही यहां लिखा रहे हैं, कोस्टल CRZ1A, CRZ1-2A एटसेट्रा, उसी को कोट कर रहे हैं। ये कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर आता है, इसमें मास नेस्टिंग होती है, इसको टच नहीं करना चाहिए। दीस आर द लॉजिक्स इज गिविंग। तो अगर आप जाओगे देखो डाउन टू अर्थ के आर्टिकल में आई सॉ, देखो ये वाला है ना, इसमें बताया कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 है, 1B है, 1A है, कितना होता है इतना डिटेल नहीं जानना है, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोस्टल रेगुलेशन जोन which is provided under Environment Protection Act 1986। ठीक है, इट टॉक्स कि कहां पर कौन सी एक्टिविटीज अलाउ होनी चाहिए। अच्छा, दिस कोस्टल रेगुलेशन जोन इज देयर, तो यहां पर शिपिंग अलाउड होगी, यहां पर हाउस बनाना अलाउड होगा, यहां पर टूरिज्म अलाउड होगा, लाइक दैट। अब एक एक चीज याद नहीं रखना है बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर, बट रफ आइडिया शुड बी देयर कि कोस्टल रेगुलेशन जोन का कॉन्सेप्ट होता है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, आप चाहो तो पढ़ सकते हो CRZ1 में क्या फायदा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, लो टाइड, हाई टाइड ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, 1986 में बना था, इससे जस्ट पहले कौन सा इन्वायरमेंट इवेंट हुआ था? What which dangerous event happened just before that? Which actually forced the people to come up with this? नहीं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 72 में हुआ था, 1984 दिसंबर, 2-3 दिसंबर 1984 एज फार एज आई रिमेंबर। एक बार ये चेक कर लीजिएगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। सेकेंड और 3 दिसंबर 1984। प्लीज चेक द ईयर, बट एज फार एज आई रिमेंबर दिस इज द डेट। ओके, तो उसके बाद जो है काफी सीरियस बात हुई थी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना भी हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो आप बता रहे हो 1972 में हुआ था, तो 13-14 साल पहले की बात। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू शुड नो। खैर, गैलेथिया बे, सो दीस आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना। ओके, एनिट को वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लेदर बैक टर्टल एंड ऑल। फिर एक चीज और थी, वे टॉकिंग अबाउट दिस की शटडाउन हो गया था यूएस में, बिकॉज आई एम श्योर यू आर अवेयर, सेनेट है, अपर हाउस है। ओके, इसमें जो अपोजिशन ने ब्लॉक कर दिया था बजट को, सो शटडाउन हैपन नाउ। ठीक है, तो अब जो उसको ईज कर दिया गया नाउ, बिकॉज I asked ChatGPT and he answered me this, that a revised appropriation bill was passed. Appropriation bill वही बजट का पार्ट होता है, मनी बिल का पार्ट, इसको रिवाइज करके पेश किया गया, so now it was passed in the Senate। ठीक है, हाँ, आज समिट, रियो समिट एक है, we will come up with that class in the upcoming week। COP30 हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग we will discuss। ठीक है, ओके, ये तो ऐसी इलेक्शन पॉलिटिकल है ना, ये हो गया। लाइसेंस ऑफ डॉक्टर्स इन दिल्ली कार ब्लास्ट रिवोक्ड। ओके, सो प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग दोस न्यूज। Okay, I'm sure because this I'm sure Govind sir would have discussed it. Then CGI to deal with claim that High Court judge approached and CLAT member. हाँ, ये हुआ था few days back. We had discussed about it. And CLAT member, National Company Law Appellate Tribunal, ये क्या होता है? ठीक है, सो जस्टिस शरद कुमार साहब ने इन्होंने कहा, यह था कि मेंबर ऑफ हायर जुडिशरी अप्रोच्ड मी। हायर जुडिशरी ने हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। सो बाद में पता चला कि भाई शायद किसी हाई कोर्ट के जज ने उनको अप्रोच किया कि फेवरेबल ऑर्डर के लिए। So, and I think Justice Sharad Kumar Sharma, he also was earlier a former judge of High Court. Okay, so and CLAT जो होता है ना, वो क्या होता है, जैसे कंपनीज में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, तो उसको जो कोर्ट केस किया था वो NCLT में जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। देन द मैटर इज अपील्ड इन नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसके अपील जाता है, फिर उसके बाद देन गोस टू द सुप्रीम कोर्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होता है ना, कभी कभी जैसे बोर्ड मेंबर में डिस्प्यूट्स हो गए, लड़ाई होगी, समथिंग लाइक दैट, है ना, शेयर होल्डर में एटसेट्रा, सो देन मैटर गोस देयर। सो दैट इज व्हाट इट वाज इन द न्यूज़, है ना। सो उन्होंने ये इल्जाम लगाया था एनक्लैट के एक मेंबर ने कि मेरे सामने कोई जज साहब आए थे और उनको रिक्वेस्ट किए थे कि एक फेवरेबल ऑर्डर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में फैसला सुनाइए।
So of course this is a very serious thing, because ideally the judge is supposed to act neutrally without even being affected by someone. हाँ, टाटा ऑल्सो फेस सम इश्यूज. हाँ, एनसीएलटी का एक जमाने में हुआ था. यस, एक साइरस मिस्ट्री का केस था एंड ही डाइड आल्सो नाउ. सो ऑलमोस्ट 10 years back the matter went into the NCLT etc. regarding appointment of chairman of Tata. 10 years back भी काफी न्यूज में था. NCLT, NCLAT etc. खैर, है ना. अंबाजी मार्बल इनको जीआई टैग मिला है. यस. Bangladeshi counterpart. So Bangladesh NSA, National Security Advisor, is supposed to come to India in Colombo Security Conclave and will meet India's National Security Advisor. So that is what it was in the news. ठीक है, Khalilur Rahman. Because currently we don't have much very good relation, especially after the change of power. We do not have very good relation with Bangladesh, but let us see what will happen. है ना. उसको पढ़ लीजिएगा. Security Conclave होता है, Colombo Security Conclave, where generally national security advisors of South Asian countries are generally invited. India, Sri Lanka, Bangladesh, etc. ठीक है. India, Canada cement ties and trade. Critical minerals. Critical minerals we have discussed so many times. These are used in electric vehicles. है ना. Karthik, I'm not aware of that fact. What you are writing? पता नहीं. I'm not sure. I don't want to comment. ठीक है. खैर, India, Canada cement ties and trade. Critical minerals. Again, critical minerals के लिए India is also trying an agreement with which famous South Asian country? को बता सकते हैं? Yes, Krishi Saldeva, right. You are right. What you are writing. हाँ. अब बताइए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंडिया इज प्लानिंग टू पेरू के साथ, है ना. पेरू नहीं, सॉरी, चिली के साथ, है ना. एज फार एज रिमेंबर, चिली. हाँ. सो ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, इन तीनों जगह लिथियम ट्रायंगल कहते हैं. लिथियम्स आर क्वाइट फाउंड. सो चिली के साथ इंडिया इज ट्राइंग टू हैव सम सीपा टाइप एग्रीमेंट की कोशिश की जा रही है. सर्च कीजिएगा. ठीक है. अगेन फॉर क्रिटिकल मिनरल एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लिथियम्स देयर व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाउडेज. तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. सो आई विल बी मीटिंग यू टुमारो विद वीकली करंट अफेयर्स 3 PM पर. एंड ये वीकली करंट अफेयर्स हो रहा है, रिविजन क्लास चल रहा है ना. अक्टूबर का आई थिंक 4th वीक होगा. एंड टुमारो एट 8 PM आई विल बी मीटिंग यू विद स्टैटिक जीके कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. सो संडे को 8 PM वाली क्लास जरूर देखिए. दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न करते हैं आप. ठीक है. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन. विल बी कमिंग अप विद मोर रिविजन क्लासेस इन द अपकमिंग डेज. ठीक है. तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सो दैट यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.